Hi everyone. So I thought I'll congratulate India on the epic win that they've had recently against England. 316 runs was it? I think इतनी लंबी मार्जिन से जीतना definitely बहुत क्रेडिट जाता है. जिस तरह से अक्सर पटेल ने बॉलिंग कराई है second innings में, the kind of control that he has, his ability to bring the ball back in, and just generally as a left arm spinner, I think he's very impressive to watch. रविचंद्रन अश्विन की 100 हुई. सो बहुत बहुत उनको मुबारक हो. मैं तो हमेशा से कहती हूँ, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड. इज़ वेरी अंडररेटेड. लोग उसकी बॉलिंग को कहते हैं कि उनकी बॉलिंग को कि वो एशिया में चलते हैं. अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट्स ली. सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर. आई थिंक इंग्लैंड की पर्सपेक्टिव से वन थिंग दैट वाज लैकिंग वाज मोइन अली एंड दे हैड जो उनके स्पिनर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मोइन अली ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स हासिल की, बट इफ़ यू लुक एट द economy rate is over 4. So that means that India's strategy against their spinners has always been to dominate and to score runs. अब जो मोइन अली है वो ऑब्वियसली जो उनकी जो कैपेबिलिटी है हमने देखी एंड में थोड़ी सी उन्होंने we saw that he went for a few, he slashed at a few एंड में जब वो बैटिंग करे थे वो थोड़ा स्पिन को मेरा हिसाब से बेहतर खेल लेते हैं. बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर मी इज़ नॉट द पिच और एनीथिंग. लोग पिच की बात कर रहे हैं कि जी पिच जो थी इट वॉज टर्निंग स्क्वायर द फर्स्ट डे. येस इट वॉज, बट दैट इज द काइंड ऑफ कंडीशंस यू विल गेट व्हेन यू कम टू इंडिया, जस्ट द वे इट स्टार्ट्स टू स्विंग दिस मच और सीम दिस मच व्हेन यू गो टू इंग्लैंड. So and it's tailor made for Anderson, all these other players that you have. I think इंग्लैंड ने अपनी तरफ से कोशिश की फाइट करने की, लेकिन जिस तरह जोरू जब आउट हुए तो बहुत इनवेरिएबल बाउंस हो चुका था और उनके बिल्कुल ग्लव पे आके लगा सेकेंड इनिंग्स में और वो कैच आउट हो गए. वो एंड में तो सर्वाइवल वाला एक वो आ गया था. आई थिंक वेयर इंग्लैंड लॉस्ट वाज एसेंशियली द फर्स्ट इनिंग्स. फर्स्ट इनिंग्स में अगर वो टोटल अच्छा करते और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करते, रोहित शर्मा का 160 प्लस करना, वो भी तो उसी पिच पे खेल रहे थे. इंडिया ने दोनों दफ़ा तकरीबन 300 किया है. दैट टेल्स यू दैट यू कैन स्कोर ऑन दीज विकेट्स. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन. So England is lacking in both departments. They don't have as many players who can play spin that well, and they also don't have as many bowlers who are as skilled enough to be bowling in these conditions. Like Dom Bess हो गए या मोइन अली हो गए. वो जो एक मैं कंट्रोल की बात कर रही हूँ ना, it's like the hard yards that you put in, which we see with Ashwin, we see with Patel. So my point here is basically that India is been the better team, and people need to accept that rather than making excuses कि जी pitch ऐसी थी, conditions ऐसी थी, blah blah blah. The most important thing is that they were the better team, and that is something that people need to understand and digest, and I think people are appreciating it. From an England perspective, I think they really need to find solutions how to play the spinners. I mean, you look at their batting lineup, चाहे Ollie Pope हो गए, Joe Root हो गए, then you have people at the top. They have really struggled, really struggled. जब उन्होंने sweep मारने की कोशिश की है तो it's not been executed properly. So for example, one thing that I picked up was, yes, sweep is always a good option against spinners because it's a way to dominate. But most of the times what was happening was because of the invariable bounce, एज लग रही थी एंड दे वर गेटिंग कॉट आउट. सो स्वीप खेलने का भी एक तरीका होता है. आई थिंक द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ टू प्ले द स्वीप इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इज यूनुस खान. आई मीन ही यूज्ड टू प्ले इट completely along the ground, and that's why he was so successful against in the fourth innings when the conditions were tough, because he really used to execute his sweep well. So I think England needs to come up with ideas of how they're going to counter India's spin, and India should stick to this combination. I feel like उनकी overall team की जो एक morale है वो बहुत boost हुआ होगा. It's a good win for Virat Kohli as well. Remember, he's been struggling for runs, he's been struggling for confidence because उनको काफ़ी देर हो गई है मैच जीते हुए. So England की winning streak टूटी है और इंडिया की जो winning streak है वो वापस आई है. Obviously एक मैच was more of an aberration. So अब देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है. You guys tell me, what do you think? What should England do? How should they counter India's spinners?